Welcome back to my YouTube channel. I hope you are all doing best. Today's topic is start OSPF. So without delay, let's start now OSPF. तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज OSPF. OSPF होता क्या है? तो शो लेट्स नो स्टार्ट OSPF. It is it is links state routing protocol. Routing protocol. Then it is dynamic routing protocol. Then it is open standard protocol. It is standard protocol. Then it is support VLSM. Then it is layer 3 protocol. Then it is provide unlimited hop count. Hops count. It work on hierarchical structure. Hierarchical structure. It is used protocol number 89. It is used multicast address 224.0.0.5, then 224.0.0.6. It is classless routing protocol. It is classless routing protocol. ये क्या होता है? इतना तो हम लोग OSPF के बारे में जान गए कि OSPF हमारा क्या होता है. एक ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल होता है और ये एक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल होता है. ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है. इट इज़ सपोर्ट VLSM. ये क्या करता है? VLSM सपोर्ट करता है. और ये लेयर 3 प्रोटोकॉल होता है. ये अनलिमिटेड होप्स काउंट प्रोवाइड करता है और ये हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है. ये प्रोटोकॉल नंबर यूज करता है 89 एंड यूज फॉर मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.5 एंड 224.0.0.6. अब ये हम आगे देखेंगे 224.0.0.5 और 224.0.0.6 कहाँ कहाँ यूज होता है. ये जो होता है क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल होता है. अब हम आगे देखते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेबल इन OSPF. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेबल in OSPF. In OSPF. PF. OSPF stand for Open Shortest Path First. Right? Got it? तो ये क्या करता है? 3 टाइप का टेबल यूज करता है. देयर आर यूज
three types of table टेबल फर्स्ट है नेवर टेबल, NEIVSPOR नेवर टेबल। सेकंड है राउटिंग टेबल। थर्ड है डेटाबेस टेबल। जो नेवर टेबल होता है हमारा, ये क्या करता है, स्टोर इन्फॉर्मेशन करता है। ये क्या करेगा हमारा, स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट OSPF नेबर, अबाउट OSPF नेबर नेबर्स OSPF नेबर्स। और राउटिंग टेबल जो हमारा होता है, ये क्या करता है, हमारा स्टोर बेस राउट करता है। क्या करता है, स्टोर बेस राउट। तो इसे हम लिखेंगे स्टोर द बेस्ट राउट। देन डेटाबेस टेबल जो हमारा होता है, ये क्या करता है, स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट OSPF डेटाबेस। स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट OSPF डेटाबेस। इसके बारे में और डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं नेट टाइप्स ऑफ नेटवर्क इन OSPF। हाउ मेनी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टाइप टाइप्स ऑफ नेटवर्क इन OSPF। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ इन नेटवर्क इन OSPF। फर्स्ट हमारा जो है पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट टू पॉइंट to point network, and there I have a configuration for there are two routers here, and first R1 and second R2. I will I can connected with only remote via this interface connectivity 1 to 1 multicast allow. I can discover never dynamically using multicast hello. It is used 224.0.0.5. Since only two routers site one the same links DR and BDR election is not required to optimize the LSA folding. Suppose that I have two routers R1 and R2. First interface IP address, I will assign IP address 10.15.1.1 and subnet mask /13 255.255.255.252. Then same configuration and R2 I will IP address assign 10.15.1.2 and slash value 30 255.255.255.252. and first of all I will assign point to point network. First I will assign point to point network and R1 this command of IP OSPF network point to point. Then I will same configuration R2 and I will check the point to point network. So without delay, let's start now. Configuration GNS, this is a GNS and OSPF point to point to point. I have a two router
I have two router. This is I will connect serial links. R1 is R1 interface S4/0 and R2 interface S4/0 is open. I will assign IP address. First open R1. This is privilege mode. I will go to global mode. Configuration thing. INT interface. It is use interface S4/0 S4/0. IP address used 10.15.1.1 and 255.255.255.252. No shut. Same configuration IP assigned in R2. Interface S4/0. Same interface both router. IP address 10.15.1.2/255/30 255.252. No shut. Then I will go to R1. I will assign command of point to point network. So show command IP OSPF OSPF network point to point. This is a start. Then I will assign the process ID and area. So same router there's same links in the serial links, so I will assign same same area 0. So IP OSPF process ID 1 area 0. Then same command assign in R2. IP OSPF network point to point. IP OSPF 1 process ID 1 area 0 area 0. I can check this command R1 first of all. R1 exit do show IP OSPF interface S4/0 exit. So IP OSPF interface S4/0. This is used for router ID 10.15.1.1 and network types point to point. It is used cost 64 and hello timing 10 second and dead timing 40 second, wait timing 40 second. Both are same, dead timing and wait timing 40 second are same. Adjacent never is 10.15.1.1 1.2. This is cost maximum never count of never 1 and I can say you can change the router ID. You can change the router ID for like that. Config router OSPF
OSPF 1 router ID 1.1.1.1 and is said that reload the user clear IP OSPF process. First of all, I will clear the IP OSPF process. So show command do show clear IP OSPF one process do clear IP OSPF one process. He has reset the OSPF process 1. Yes, yeah, yes. This is clear the IP OSPF process and change the router ID. So check git show IP OSPF interface h4/0 show IP OSPF interface h4/0. This is changed for router ID 1.1.1 and network types both are same. Sorry, network type point to point cost 64 and it is use hello timing and dead timing 40 second and hello timing 10 second. It is use the full mesh topology. You can check the full mesh topology. So show IP OSPF never. This is full mesh topology. You can change the never ID and you will go to router 2 and so exit show IP OSPF network or show IP OSPF interface h4/0. This is router ID 10.15.1.2. This is router ID 10.15.1.2 and network types point to point and cost 64. It is a hello timing 10 second both routers and same configuration and the dead timing 40 second, wait timing 40 second, and you can change the router ID conf router OSPF process ID 1 router ID 2.2.2.2 and same configuration the reload the user clear OSPF process. So let's now do clear IP OSPF one process. This is yes, and you can check the do show IP OSPF interface s4/0. This is the router ID 2.2.2 and network type point to point cost 64 and adjacent with the never 1.1.1. Then you can check the neighbors and never ID 10.15.1.2, but then we'll check 2.2.2 and state full date timing 34 second and address 10.15.15 interface serial. This is a point to point network.